In December 2023, we decided to leave winter behind and flee to summer. And what better place to live summer in other than the Andaman and Nicobar Islands. This is the view from our circuit house. This is so pretty. You can see the beach right there. A government job doesn't sound so bad now, does it? Come, Mama, show your outfit. Originally, our trip to the Andaman and Nicobar was to take place in 2021 before the lockdown, but it finally came to fruition after 2 years. For my dad, after 31 years. He had promised his college roommate of 4 years in engineering college that he would one day visit Andaman, and that one day was here. Who knew it would be with his lovely daughter as an addition. सिलेंडर एक महीना में 48 सिलेंडर हो रहा है. सारे सिलेंडर वहाँ पाइप कहीं On our views of worker, and it's all working with the help of cylinders. This one and the other one as well. पीपल ट्री स्टोरी बता रहे सर. असली में ये पीपल ट्री आई विटनेस करने के बाद उसी पेड़ को. So I'll give you a gist of what he's trying to say here. Out of all the places in Andaman and Nicobar that we wanted to visit, the cellular jail was one of the main places that we wanted to go to. So he's saying that the people tree here has been an eyewitness to all of the horrors that has taken place in this jail, and the light and sound show that does take place in the evenings is a story that is being told by the tree, which is there and has been there since time immemorial. So that's pretty iconic. यहाँ के लोग इधर वर्क करेंगे, ऑफिस में मिलने नहीं देते थे. कोई भी कैदी ऑफिस में मिल नहीं पाता था, यानी कि कैदियों से मिलने नहीं देना, यानी कि आंदोलन शुरू हो जाए. This is the famous cellular jail, and this is where the light and sound show takes place. We researched so much about this before coming here. फैक्ट्री का किचन हो रहा था, ये ब्रिटिश ऑफिस का किचन हो रहा था. अभी इंडिपेंडेंट का बाद जो टोटली इसको ऑफिस बना कर रखा और वीआईपी को रूम बना दिया. खाना यहाँ से लिया जाते थे. और ये फ्रीडम फाइटर का ऑर्डर थे, और ये ब्रिटिशर्स देते थे. तो एक साथ 3 को देते सर, सिंगल को नहीं देते थे. एक ऑर्डर होने पर आपको 3 महीना 4 महीने तक रख देते हैं. 3 होने पर तक वेट करते हैं. तो 3 एट टाइम जब होते हैं, जब भी इनको हैंगिंग करते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म में खड़े होने के बाद आपको रस्सी में गले में डाल करके लीवर को खींच देती थी. डोर ओपन होकर के बॉडी नीचे चले जाता था. और ये रस्सियाँ चेंजेस किया हुआ प्लेस ओरिजिनल से जाते, इसलिए आपका हेरन का रिंग डाल कर रखा. और बॉडी को कलेक्ट करना, नीचे जाना सर. डोर ओपन होती है तो नीचे बॉडी नीचे जुड़ जाता था. तो 1 घंटा होने के बाद डॉक्टर डेड डिक्लेयर करा के बॉडी को यहाँ से कलेक्ट करके इस रूट से आउट करते थे. तक चला 32 ईयर्स सर्विस में था सेलुलर जेल. 32 ईयर्स में बहुत लोगों को मर गया होगा. एक साथ 3 को बोलने से, महीना में 3 होने से भी एक साल में 12-15 तक हो जाता. जितने फ्रीडम आए थे ना मैडम, अंडमान में रहना, यानी कि इसलिए आपको काला पानी का सजा कहते हैं. 1 वे मैडम, दोबारा यहाँ से वापस नहीं भेजते थे. यहीं रखते थे, यहाँ काम करवाता था, खेती बाड़ी दे करके सेटलमेंट कर रहे थे. अभी मतलब वैसे ही सेटलमेंट किया हुआ है फैमिली अंडमान में. हाँ, उसी लोग से शुरुआत हुआ अंडमान. The work shed. ये ऑयल ग्राइंडिंग मशीन होता था सर. उस जमाने में ऑयल ग्राइंडिंग इसी मशीन से करते थे, और ऑयल वहीं से कलेक्ट होता था. ये तो हार्ड वर्क था. पहले तो बीटा फ्रीडम पेट्रोल का करने से पहले बैल से करवाते थे. तो यहाँ आने के बाद फ्रीडम फाइटर से करवाते हैं. डेली 40 पाउंड निकालना मैडम, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल. शाम तक निकालना. ये पनिशमेंट वर्क है मैडम, ये हार्ड वर्क था. आपको गले में रहेगा कैदी नंबर थे मैडम. यानी कि फुल डे अब तक स्टैंडिंग में खड़ा होकर काम करना, बैठने नहीं देना इनको. यानी कि चेन फिटर है, वार्ड फिटर है, क्रॉस फिटर है. ये दोनों तो कभी कभी बैठ सकते हैं, लेकिन चोर छिपाई बैठ सकते हैं. उनके सामने नहीं बैठ पाएगा. ये तो बिल्कुल बैठने नहीं सकता, कि क्रॉस फिटर है सर. Here he was explaining how the lock is only there from the outside, and it stretches all the way to the main door, because of which the people from the inside could never get outside. और ये है पैकिंग बाय आंसर. बर्तन में सुबह उसी में बैठते थे. वॉशरूम होने के बाद सुबह अपना खुद लेके जाके पैक करके वॉश करके लाते थे. It's pretty eerie knowing that such a beautiful place / jail held so many moments of horror once. गवर्नमेंट आने के बाद तो टोटली 693 सेल्स हो रहा था. सेल 7 बिल्डिंग में, और 700 फ्रीडम फाइटर को रखते थे.
और सारे लोगों को वॉच होता वॉच करने के लिए। और बिल्डिंग बनाया फ्रंट एंड बैक, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी कम्युनिकेशन नहीं होना। और हर एक बिल्डिंग के सामने कार करना बन गया, वर्ष काम करो। तो टोटली आपको चला सर बिल्डिंग 1938 तक है। तो 1942 में ये अंडमान को जापानी लोग अटैक किया सर, जापानीज रह रहे थे 1942 से 42 तक, और ब्रिटिश और जापानीज यहाँ वार कर रहे थे। तो 1945 में 4 बिल्डिंग डैमेज हो गया सर। तो ये बैक साइड का पूरा डैमेज हो गया। अभी बचा 3 बिल्डिंग बचा हुआ सर। ये विंग नंबर है 671, ये 3 बिल्डिंग बचा हुआ सर। बाकी सब जापानी लोग एयरक्राफ्ट से लाइव एयरक्राफ्ट से बम डाल दिया, तो पूरा डैमेज हो गया। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन 1964 में टोटली वो प्लेस को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। जीपी पंत हॉस्पिटल बन गया मैडम, पूरा हॉस्पिटल बन गया 1964 में। अभी रनिंग हॉस्पिटल है मैडम। कोई साल का पनिशमेंट था, फ्रीडम फाइटर का करके रखा ओरिजिनली लॉक सब। अभी तो इतना सेफ है हाँ। कि गिरने का चांस नहीं है। अभी तो 70 years था मैडम, 38 में रिलीज किया था मैडम, 66 में नेचुरली डेथ हुआ था। इसके इसलिए क्लोज कर लिया। हाँ क्लोज कर लीजिए। क्लोज करके सर आते लॉक वहाँ से लंबा लंबा करिए मैडम, फोटो नहीं सीधा ओके वाले सिखाना सीधा पकड़िए सर। सामने आगे पकड़िए है ना, खींचे तो तो विलेन है, विलेन खींचे तो क्लिक कैसा and the mom food you get from here oh गरीबी इंग्लिश हिंदी कम ही बोलते हैं। अरे वो इधर हो, तुम लोग सब काम किया। डेविड बेरे तो ब्रिटिश था। हम तो सिर्फ आइडिया उन लोगों का था। हाँ आइडिया उनका, इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था उनका था। और इंजीनियर वो तो सारे जो लेबर से इंडियंस थे। मॉडिफाइड जेलर, modified jailer with OOTD with outfit with oranges in hand with pen पहले से निकल गया ये सेकेंड में। तो ये 1921 से यहाँ से इसको जो है रत्नागिरी शिफ्ट किया था। और ये सब आपको जो है तो बाद में फिर जो कुछ का नाम था डैनियल रोस, उसी का नाम रखा गया था। ना आप ऊपर जाके आइए। ठीक है। What is this? सो में जो स्टोरी में यहाँ से Thank you. पंजाब का भी पंजाब को, उत्तर प्रदेश का। This is facing this side and this is the back side of the other jail so that they never face each other. वाले को एजेंट को रखते थे। And everyone is in solitary confinement. And the only way that people could leave was if they went to the ocean, which is now called the Kala Pani, and it was almost impossible to survive that. Hence the name. So this is the place where they have the photos of the freedom fighters now. इस बोट पे कल आप यहाँ से जाओगे इस आइलैंड पे घूमने के लिए। तो अच्छा सुंदर है। but we want to stay in the jail. यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज करना पड़ता है, पैरासेलिंग हो गया, बोटिंग हो गया, जेट स्की हो गया, वापस लग रहा है। Be careful. There's a Toyota.
What is it? 100 rupees. 100 rupees. अबे Plus. सबसे क्यूट वाला तो कौन हम लोग फोटो खींचे स्नेक आइलैंड कोई जेट ना वीडियो पे The speed was manageable, but the first round, I swear our driver was trying to kill us. The kulfi, bhel puri, everything was 50 rupees and above. So either we were getting scammed or really the rates were just high. You see again what is that? I want one. Mà sao mà lại mà nó không phải vào đây nữa. The fact that the light and sound show was about everything gruesome that had happened in that place in the past felt a bit weird to me, honestly. But also I understand that it was to spread awareness amongst all the people who had come to watch, not only Indians but also the tourists. So I guess the weird feeling that I had in me after watching it was the entire point of the show. We then ended the night with a beautiful dinner by the sea. भैया कहाँ जाना पड़ेगा Tari bata. We are at Ross Island where there are a lot of deers. They're staring at us. This one. So pretty. Deers like come. Come here. Now she's coming. Yeah, I know. You chased him away. Leave it there and like us. Let's go. Scared. They are scared. Randomly walking amongst deers, Mama. रोज आइलैंड अंडमान निकोबार का पहला राजधानी का ब्रिटिश टाइम के आइलैंड का पहला स्टोर जनरल स्टोर का ऑर्डर में
British time weekly. जूनियर ऑफिसर्स का क्लास था ये। Junior officers club. बारहवीं में सब कुछ था उसके Roman Catholic Church. ये क्या है? Calvin. No. बहुत गर्म है. The bucket list item waiting to be ticked off of my list was scuba diving. As you guessed it right. And I've always been so scared of the underwater, but I also love facing my fears, and I thought, better now than never. Before that, we decided to have a look at the underwater world because Mama and Papa were not going scuba diving, but this activity just made us feel very pukish and claustrophobic at the same time. It was going really slow, and the fact that all the seats were up and we had to like bend and look downwards is why we felt very pukish. Look at us, we were so happy to begin and sit on this ride, but then as we proceeded we felt really sick. There was also a lady who puked and her kids were horrified. Honestly, would not recommend this activity because we couldn't really see the underwater that clearly either. But yeah, I guess people who were not going scuba diving or snorkeling could try it out. We found Papa sitting next to our family eating crab. It honestly looked like he had been adopted by them, and it was hilarious. During this time, I had gone scuba diving with zero thoughts in my head. I was very apprehensive at first about going underwater, but once I was there, I just wanted to go further down. I was honestly kind of bummed when he asked me to come up, and it was all over. I remember asking the scuba diver, was this it? This was so short. Oh, I remember this so well. I was so scared when I was going down, but as soon as I saw a cameraman underwater, and he asked me to pose and give him a peace sign, it distracted me so quickly and I felt so comfortable because of the camera that I lost all of my fear of the underwater. The view down there was insane. I also saw Nemo's little house, and it's exactly like how it is in the animated movies. It was pretty much a ZNMD moment, and I felt like Arjun at that time. Good days will come, they will. My pessimism is talking, can't seem to tune him out. There's a phrase that I hum to myself if ever I'm in trouble or doubt, and it is, good days will come, they will. I've met the friend and the friend is me, is a line that the children wrote. I know what she meant, but I don't know what she means when myself and I act so close. But I hope that good days will come, they will. If I am not my thoughts. This is Andaman's Marine Drive. Our heroine is in the middle of Port Blair. Catch kariya. We missed the shot where Mama's hat flew away and she just held it with one hand. Like a pro. No, I'm going to take it to the ticket.
We then went to Asia's largest and oldest sawmill. Never meant to make her cry. Apparently this is where the Japanese had bombed Andaman. Let's see. Huge bomb. What was quite interesting about this was that you could keep your car or any vehicle in the ship slash cargo and move on to the next destination and drive on from there itself. This is the scenery behind the old 20 rupees note. Second highest peak in Andaman. Never meant to make her cry. Now I'm seeing tears in her eyes. Oh, Mama, sit on the ping. There. Naam share doge. Half and half, make believe. So she What is thought this? my heart was on my sleeve. Is this a person, local person? Honey, I cried too. Better believe it. Honey, my heart still beats for you. Legs are too short. Yeah. Then we moved to Ave Maria Church, which was a church shaped in the shape of a ship. Hello hens. Hello Andaman hens. So fancy. My energetic mother has gone up the stairs to see the church. This is the view from the top, and this is the church. Looks pretty interesting. Better believe it. Interesting. Honey, my heart मैं जीवन still की beats रोटी for हूँ. you, even though you don't feel it. Honey, I cried too. नहीं मैं नहीं बोल सकता Better believe it. My heart still beats for you.
You want to no you should remember. She's torturing herself full after it. Why torturing yourself? Mama no. First noticed that you were back. Crystal, come right back. I've been waiting for you to slip back in bed when you light the candle. Picturing. This is our, what is this called? It's a macruse, but it's called something from sea. We forgot. So we're going to travel in this to have a